next session involves laparoscopic suturing on the bowel. This session will be conducted by Dr. Ghulam Mustafa. He is an illustrious general surgeon specialized in bariatric surgery with over 15 years of surgical expertise. His Dosti campaign is renowned for providing medical and surgical treatment for obesity at an economical cost. Please put your hands together for Dr. Ghulam Mustafa. Thank you very much for the invitation. Presentation. Right. So, without wasting time, can you hear me, everybody? Okay. Without wasting time, I will move forward towards the presentation. Right. So this was the question when I joined Dr. Murtaza Meher on the very first day. उन्होंने कहा suturing आती है laparoscopic में? मैंने कहा नहीं. तो कहते हैं do you know of a surgeon who doesn't know how to suture? मैंने कहा नहीं. So this is so crucial. And अगर दूसरा मैं सवाल पूछूं आपसे कि how many times you opted for open approach, or you converted to open just because of the reason that you didn't know how to suture? Most of the times, yeah, many of the times. This is one of the reasons that we opt for open approach. So, how to reach at this level? Number one, as Dr. Murtaza said, he was, उन्होंने तो underestimate कर दिया कि 20 घंटे I practice is at least 100 hours. सर आते थे 10:30 बजे, मैं 9 बजे जाके practice करना शुरू करता था जब तक सर आ जाएं. तो it was like at least 100 hours on the simulator. And then second thing is playing with the needle, with the tissues at a place जहाँ पे कोई आप उल्टा सीधा भी ले लें सूचर तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. That is TAPP. तो वहाँ पे फिर practice की. So inguinal hernia TAPP is a very good place where you can practice hand-eye coordination, everything. And then comes the laparoscopic appendectomy. तो उससे पहले laparoscopic appendectomy से पहले मैं ये करता था कि गॉल ब्लैडर में नीचे क्लिप्स लगा ली, ऊपर की तरफ मैं सिर्फ नॉट प्रैक्टिसिंग के लिए तो नॉट प्रैक्टिसिंग उस पर कर लेता था. उसी वक्त ही पता चल जाता था कि मेरी नॉट अगर सही है तो बाइल लीक नहीं होगा. तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड करेंगे. एंड देन सब टोटल कोलिसिस्टेक्टमी, सो क्लोजिंग द स्टम्प. तो उसमें भी अगर लीक होगा भी तो इतना डेंजरस नहीं होगा जितना कि बावल का लीक होगा, क्योंकि वहाँ पे ड्रेन है किसी तरह से बंद हो जाता है. इस तरह से स्टेप वाइज वी कैन मूव अहेड reaching at the level of the laparoscopic bowel suturing. Right. So general principles are the same जो हम open में कर रहे होते हैं. It's the same. Everything is same जो कि हम open में करते हैं. The general principles are the same. Adequate blood supply, orientation, and everything is same. Now, most important as far as laparoscopic is concerned is the ergonomics. जो सबसे पहला हमारा था ergonomics. कि ट्राइंगल हो, 60 डिग्रीज की एंगल्स होंगी तो बहुत अच्छी आपकी नॉट टाइंग होगी. सो ओरिएंट द बॉवल, एडजस्ट टेबल हाइट, ये इंपॉर्टेंट है. जैसे यहाँ पे इशू आप लोगों का आ रहा है कि वो इसकी एडजस्ट नहीं हो पा रही है तो आपके कंधे दुख जाते हैं. अमूमन ऐसा होता है कि जब बाय द एंड ऑफ द बैरियाट्रिक सर्जरी में जीजी एनास्टोमोसिस अगर आपका हाथ ऐसे है तो उसके बाद ट्रेपीजियस आपका बैठ जाता है बिल्कुल. इट्स सोर्स लाइक एनीथिंग. सो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो नीडल होल्डर है. कौन सा नीडल होल्डर इस्तेमाल करें? सो द नीडल होल्डर दैट द सर्जन इज़ कंफर्टेबल विद, जो वो कॉमनली यूज़ कर रहा होता है, दैट इज़, एंड द नीडल होल्डर दैट अलाउज मैक्सिमम मैनिपुलेशन, फ्लेक्सिबिलिटी टू योर हैंड्स. इसी तरह इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, सुबह भी इसी चीज़ को हम अर्ज करते हैं. इकोनॉमी ऑफ स्पीड इन सर्जरी इज़ इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट्स. सो देयर आर सेवरल नीडल होल्डर्स. टिप तकरीबन सेम होती है. इट्स अबाउट द हैंडल. नाउ दिस हैंडल एड्स, ये जितने भी हैंडल्स हैं आप इसमें देख रहे हैं, देयर इज़ अ रैचेट इनटू इट. तो जब तक आप उस रैचेट को आप प्रेस नहीं करेंगे वो खुलेगा नहीं. सो वन मैनूवर मोर, और उसके साथ साथ आपको एक ख़ास एंगल पे आके उसको काम करना होगा, वरना वो काम नहीं करेगा. उस तक पहुंचने के लिए फिर आपको अपना हाथ छोड़ना पड़ेगा. तो the maneuvers are more, there is less economy. ये जो रूटीन में हम यूज़ कर रहे होते हैं लेप्रोस्कोपिक में भी होता है, जिसमें हम
फिंगर ग्रिप जो होती है, इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि आप यू कैन मूव योर फिंगर्स मैक्सिमम अप टू this degree, 180 degree. But this asculep, this one I routinely use, Dr. Murtaza also uses this. This asculep is like 360 degree. You can hold it like this, you can hold it like this. You can just click once, it will hold the needle, click twice, it will release the needle. So you don't need to adjust a lot. So this asculep, this has a very fine tip, and this allows us a very good flexibility in our hands. So the selection of the needle holder is very crucial for any anastomosis. Then sutures on the bowel. So round body as in open, needle size क्योंकि 23 to 31 आप easily ports से insert कर सकते हैं, उसके बाद फिर बहुत thick हो जाती है, diameter wide हो जाता है. So needle holding जैसे अभी हमने किया, यहाँ पे practice कर रहे हैं tip of the needle holder. The needle should be held at the tip of the needle holder. Needle tip slightly angled forward ताकि आपकी angle tissue के, क्योंकि हम 60 डिग्री पे काम कर रहे हैं, अगर बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी तो टिश्यूज़ के साथ एंगल नहीं बनेगी, तो स्लाइटली एंगल्ड फॉरवर्ड, तो वो आपकी एंगल से ही बन जाएगी फिर, ठीक है. देन एज इन माई स्टेशंस रिवर्स किस तरह करना है, फॉरवर्ड किस तरह करना है, क्योंकि सूचरिंग जब हो रही होती है तो यू नीड टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ forward as well as reverse needle. So avoid taking posterior wall of the bowel. किस तरह से आप लिफ्ट करें टिश्यू को, बूजी डालते हैं हम जीजे में, इस तरह से कर सकते हैं, या प्रीवियस सूचर को आप उठा लें तो उससे you can avoid taking the posterior wall. And entry at 90 degrees, जिस तरह से डॉक्टर फरहान ने आपको बताया कि 70 to 90 डिग्रीज पे आप एंट्री करें, अदरवाइज क्या होगा कि सिर्फ सिरोजा आ जाएगा. आपको एक क्विकली कैसे पता चल जाएगा कि मैंने एडिक्वेट लिया है या नहीं? इफ़ यू कैन सी थ्रू द इफ़ यू कैन सी द नीडल थ्रू इट, यू आर नॉट हैविंग द एडिक्वेट टिश्यू. सो सी थ्रू हो तो रिवर्स कर लें, फिर दोबारा से आप go into the tissue at 70 to 90 degrees while taking care of not to take the posterior wall. Then rotatory movements of the hands. So it's again the economy of movements. When you insert the needle, rather than pushing your needle holder, twist your wrist like this. Follow the curve जो डॉक्टर फरहान ने भी दिखाया, सब ने सुबह से जो, follow the curve of the needle as well as your wrist. Rotatory movements rather than pushing and pulling movements, right? So these are the some of the so avoid holding suture too tight to fracture it. यहाँ पे important चीज़ ये है कि जितने भी needle holders यहाँ पे रखे हुए हैं, they are almost out of order. Needle holder ऐसा होना चाहिए, when you start closing it, तो before the first click उनकी jaws close होने चाहिए हैं, ताकि हम बार बार जब ये मैनिपुलेशन करते हैं, नीडल सूचर को स्मॉल कर रहे होते हैं, तो कितनी दफ़ा आप क्लिक 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 करते जाएंगे. सो इट शुड बी बिफोर द फर्स्ट क्लिक द जॉ शुड क्लोज, तो उस वक्त हमें पता चल जाता है कि मैंने सूचर को सही पकड़ा हुआ है. तो इस तरह फ्रैक्चर से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. बाकी इंटरप्टेड, कंटिन्यूस, बार्ब, नॉन बार्ब, कौन सा यूज़ करना चाहिए, इट्स ऑल योर ओन प्रैक्टिस. जिस तरह से सो मास्टर वन टेक्निक, वट एवर यू आर डूइंग इन ओपनिंग, मास्टर दैट टेक्निक इन द लेप्रोस्कोपिक एज वेल. तो कंटिन्यूस इसलिए हैंडी होती है कि बार बार सूचर नहीं करने, नॉट्स नहीं टाई करनी पड़ती, टाइम सेव हो जाता है इस तरह से. बट इट्स अप टू यू, जिस तरह से आप जिसमें सेफ समझे. बट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हियर हम ये करेंगे कि पोस्टीरियर भी कंटिन्यूस लेंगे, एंटीरियर भी कंटिन्यूस लेंगे, ताकि सबको एक फील भी मिल जाए और बारी भी मिल जाए बावल एनास्टोमोसिस की, और क्विकली भी हो जाएगा इस तरह से. नाउ देयर आर 2 वीडियोस सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसमें कि किस तरह से हम सूचर्स को ले रहे होते हैं. ओके, सो इसमें आप देखें कि हम कर्व को यूज़ कर रहे हैं, एंड विद मिनिमम मैनूवर्स. जैसे ही उन्होंने नीडल इंसर्ट की यूजिंग द कर्व ऑफ द नीडल, एंड अब टाइट करना देखें किस तरह से एंगल से हम टाइट कर रहे हैं ये, विदाउट एनी अदर पर्सन. लेफ्ट साइड से आप देखें, मूव जस्ट रोटेटरी मूवमेंट्स एंड यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सूचर.
So minimum manipulation, economy of movements, speed of surgery here. ठीक है, तो आप भी जब करेंगे यहाँ पे तो similar, you insert the needle, enter the tissues using the curve of the needle and rotatory movements of your wrist, come out and holding with another hand the Maryland, just rotate the Maryland, it will come out, the needle will come out, and then hold the needle, the needle with the needle holder for the next suture. अब interrupted की लगा लें. अब इंटरप्टेड में ये है कि आपकी बार बार नोटिंग की प्रैक्टिस होती रहेगी, लेकिन फिर दूसरे को शायद बारी ना मिल पाए, इसलिए इन ऑर्डर टू हैव, सो द प्रिंसिपल्स आर सेम एज ओपन. सिर्फ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फील, अर्गोनॉमिक्स, डेप्थ परसेप्शन, इन सब चीज़ों की यहाँ पे है. राइट, ठीक है. सो फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम पोस्टीरियरली भी एंटीरियरली भी कंटिन्यूस सूचर्स लेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. Ladies and gentlemen, now I would request Professor